Okay, today what we are going to cover is a small topic. So that is feeding and nutrition of equines. Okay. So during this presentation, I would be introducing how this equine species horse is different from other ruminants with respect to a digestive system, with respect to nutrient requirement, with respect to feeding types and feeding system. Okay. So I would be covering on all these areas. So as I was telling in the first class, that's introductory class, this particular equine population, either it lies with the poor people or with the elite people or with the government organization. Okay. So this species is nothing to do with middle class family. So when it comes to equine population with the poor farmers, due to financial constraint, whatever you suggest, okay, whatever you suggest, they may not do it. And whatever you feel are that it should be scientific, they may not follow it because of financial constraint. Okay, they'll try to follow their own method of feeding, which they've been doing it since so many years. Contrary to that, another 2% of the equal population, either with the government organization like military or institutes or paramilitary or in the race course, where there is no financial constraint. So all your norms with respect to nutrient requirement or with respect to feeding system, okay, they will try to follow you because they want to get maximum performance with the few animals. Okay. With respect to feeding and nutrition, we have to address in the both the perspective. Okay, with the poor people as well as with the elite people. So when you say feeding and nutrition, there are two parts. One is nutrient requirement. Another is how you are going to offer. Both you have to take care. Although you may provide very good nutrient or you can say feed having good nutrient components, but method of offering to these animals, if it is not suitable to its true nature of feeding behavior, then animal may not enjoy and animal may not consume to a greater extent. So on this contest, you should also know that how exactly this ingestive behavior is exhibited in particular species. Okay. If you see this species in the wild condition, okay, mostly they are on the grazers condition. Okay. So they keep on grazing on the pasture land and they try to eat small amount because of small stomach and they will try to eat more of fiber forage. So there is a minor difference between this species and ruminants in general, whether it's a small ruminant or large ruminant. Okay. So by default, these animals are natural grazers. Only difference is that their intake is very much consistent. Consistent means they keep on eating from morning to evening with a particular pace. But if you take ruminants, so there are surges after milking, or sorry, before milking, you may see the surge of feed intake. Again, after milking, you may see the surge of feed intake. Similarly, in the evening, before milking and after milking. Again, in the late night also, you would see the surges in the feeding by the ruminants, whether it's a cattle or sheep and goat. But by and large, horse, generally they don't consume any feed in the late night. For ruminants, since they are able to regurgitate, they can eat fast whenever they get an opportunity to eat. But this animal, though they may get opportunity to eat a good quality feed and fodder, but it will prefer to eat slowly rather than going fast. Okay, this is one point. And ours are herbivorous, you all know it. And ours are designed to nibble and graze throughout the day, spending a significant portion of their time in eating. And ours will also overeat due to aptly functioning satiety center. Means if they don't feel satisfied
they may eat more also, more than their requirement. In case of ruminant, if they eat more, they can regurgitate and they can manage it. But these animals cannot regurgitate, so it will end up in the colic. Okay. So this particular animals feeding habit little bit sensitive. So that's why one should not compare with the ruminants. Now let us see little difference exists between horse and donkey. Horse are very selective grazers, very picky eaters, and they considerate about the palatability and availability of the nutrient both. Okay. In case of donkey, they do not graze as often as horse, means they do graze, but not as often as horse. They are easy keepers and they don't need supplements. In case of horse, supplements are very much mandatory. Since you are taking too much of work from them due to their profuse eating, their profuse salivation, they need supplements like minerals, salt leak, okay, other vitamins. But donkey may not demand. Okay. So before understanding how delicate it is, because in the beginning we told that horse digestive system is very delicate. If they eat less, it's a problem. If they eat over, it's a problem. If they eat moldy feed, it's a problem. Okay, if they eat too much of green fodder also, it's a problem. Why? Because of this anatomical feature of this particular species. If you see the digestive system of this horse, the stomach is very small, only 8% of the digestive system. And majority of the digestive system includes small intestine and large intestine. However, in case of ruminants, most of the digestion takes place in the rumen itself. That's why we call it as a rumen is a miracle. Anything it eats, whether it's a good quality, poor quality, it treats same. Okay, even if you give a good quality, high nutrient or you can say high proteinous diet also, it will treat it as a low nutrient diet because of microflora. But in case of horse, such thing will not happen. The small stomach, only it can accommodate small quantity. Okay. And there is another important organ, that cecum, which makes this species very, very unique and delicate. Very unique and delicate. We would be discussing when you take up organs one by one. First, mouth, which is called as a prehensile organ. Okay. When you study the behavior course, mouth becomes very important. Why sheep exhibit only grazing? Why goat exhibit only browsing? Okay. So similarly, in this case also, the horse involves both lip, tongue, and teeth while consuming anything, in particular green fodder. Okay. So what it does while eating, it uses its lips for selective purpose, for the selection or preference of the foliage or the plants which are found on the pasture. Okay. Then it bites with the help of teeth. Then it grinds. Okay. So during this process, there is a lot of saliva production along with mastication. Okay. This saliva will help as a lubrication or laxative, and also it acts as a buffer in the proximal region of the stomach. Okay. Next, stomach. As I told you in the beginning, is very small. Because of this small stomach only, animal eats small quantity at too many intervals. We call it as a bouts. ठीक है, एक बार खाना शुरू करेंगे, 5-10 मिनट खाना, फिर रुक जाना, फिर 5 मिनट के बाद फिर खाना. That we call it as a bouts. ठीक है ना? So they try to eat continuously, but with little bit of gap. Okay, and this particular stomach, the stomach has got two types of sphincter. One is cardiac and pyloric, and this cardiac sphincter, which is connecting this esophagus and stomach, which is very strong. Okay, which is very strong. Because of this strength, whenever there is a
vomition sensation, okay, animal cannot vomit. In other species, including human beings, okay, so whenever we feel little bit of discomfort in the stomach, immediately we get that reflex and we'll vomit. Even if you keep your finger in the throat, it produces the vomition reflex and you can vomit. But because of this strong cardiac sphincter, this animal cannot vomit. So since it cannot vomit, so we have to be very cautious that what it goes into the stomach, it should be good quality. What if it does not offer good quality feed, or you are offering a good quality feed once in a while, due to some reason you have offered some moldy feed, ठीक है, स्टमक अपसेट होगा, हमारा स्टमक अपसेट होगा तो गैस प्रोडक्शन होगा तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ बेल्चिंग, वो भी नहीं होता इसमें, ओके, सो देन इट लीड टू कॉलिक. If at all, if it has to regurgitate, it will happen only as long as it stays in the stomach. Once it enters into the, as long as it stays in the esophagus, once it enters into the stomach, it will not come on. Okay. So if this is the situation, what happens? If at all, if it's a wrong type of feed, what happens? There is a possibility of fermentation in the stomach, which will increase the lactic acid, which further impairs the relaxation of pyloric sphincter. Otherwise, those sphincter में by default cardiac sphincter तो strong high या relaxation नहीं होता है, जिसकी वजह से वॉमिट नहीं होता है. गलती से अगर मोल्डी फीड स्टमक के अंदर if it enters and there if it get fermented and it will lead to a release of lactic acid, वो lactic acid जो pyloric end है, pyloric sphincter है, वो आराम से फूड निकलना चाहिए, वो गड़बड़ कर देगा. ओके, सो फर्दर इट विल लीड टू ए रैप्चर ऑफ स्टमक एंड लीडिंग टू डेथ. ठीक है, इसीलिए एनिमल ईट्स लेस क्वांटिटी. इवन इफ you should offer less quantity at frequent interval. That's why I'm repeating again and again, because of this physiological nature or anatomical feature of the stomach. Okay, small intestine. This is again another important organ. Before entering into the cecum, which is considered as a fermenter, just like rumen. Okay, but before getting into cecum, small part of digestion will take place in the small intestine. That we call it as a pre-cecal digestion. And this depends upon the type of grains, how they are processed. Okay, means again, if you offer here any moldy type of feed, if at all if it escapes from the stomach, okay, here it may lead to a further complications. Okay, here also it should be very free from the mold or fermenting type of any type of feed. Okay, so that's why in case of horse or in the mules or in the donkeys, probably आपने देखा होगा, ऐसे प्रोटीन सोर्स by and large they give chole, okay, channa. Okay, whenever they offer these gram, they soak overnight and they will give to these animals, just to avoid that type of fermentation and also a proper digestion. They don't offer any dry channa or any protein directed to these animals. Okay, similarly, you might have seen this टांगा horses. ठीक है, जब वो लोग रेस्ट करते हैं उस समय उनके पास एक ग्रेन्स का या चोकर कहते हैं या इसको व्हाट कैन से छिलका, जो छिलका होता है चन्ना का, उसको एक बैग में रख के एज एंड व्हेन एनिमल टेक्स रेस्ट दे पुट ए फीडिंग बैग ओवर द एड सो दैट आर्स विल कीप ऑन ईटिंग स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि दूसरे टाइम में वो काम की वजह से वो नहीं खा पाता है. सो दिस प्री-सीकल डाइजेशन इज सपोर्टेड बाय ए गुड टाइप ऑफ फीड. ओके, अगर मान लीजिए उस समय ड्यू टू वन रीजन इफ एनिमल इज ऑन फास्ट, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेस, इफ सडनली रैपिडली इफ इट ईट्स अगेन इट लीड टू फर्मेंटेशन. ओके, इन द सीकम, अगर किसी कारण की वजह से जो प्री-सीकल डाइजेशन व्हाट वी कहते हैं डाइजेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, होना चाहिए. अगर यदि नहीं होता है फिर सीकम में जाके देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंपैक्ट. अगर वहां कोलिक में सॉरी सीकम में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पार्शियल डाइजेशन शुड हैपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सीकम, फर्स्ट पॉइंट इज सीकम इज कंसिडर्ड एज ए ब्लाइंड सैक.
Anatomically, if you see, ठीक है, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, सो दैट इलियम वेयर इट कनेक्ट्स द सीकम, फिर सीकम से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो आउट होगा, इनलेट एंड आउटलेट, दे आर ऑन द बेस ऑफ द सीकम। कहने का मतलब है वहीं से एंट्री होगा, वहीं से एग्जिट होगा, बचा हुआ सारे पोर्शन जो होगा जस्ट इट एक्ट्स एज ए ब्लाइंड सैक। इस फोटोग्राफ में आप देख लीजिए 9, 10 एंड 11, जहां 9 लिखा हुआ है वहीं से इनटेक इनलेट है, वहीं से आउटलेट है। 10 and 11 is nothing but a blind sac. Though this cecum acts as a fermenter, which is important organ in the digestive system, but by virtue of this anatomical design, दो पॉइंट इसमें, one is it is a typical blind sac, another is position of the cecum will make very sensitive digestive system. ठीक है, किसी कारण की वजह से if at all if it gets impacted in the cecum, 100% this is going to end up in the colic. And again we are using the word colic because this is one of the common physiological disorder. जैसे कैटल में होता है लेमनेस, मिल्क फीवर, ठीक है, उसी तरह से once in a while due to managemental reason, due to any faulty feeding, okay, due to sudden extreme climate like thunder, lightning, ठीक है, may end up with the colic. Okay, so that's why to avoid this impaction in the cecum, proper provision of water along with the diet is an important issue. Okay, जितना पानी के बारे में हम स्ट्रेस करते हैं हॉर्स में, उतना किसी और स्पीशीज में स्ट्रेस नहीं. You got my point? So because of this anatomical design and position of this cecum makes this digestive system further more delicate. Okay, so now after understanding the anatomical feature of this horse, one should keep in mind that while feeding to these animals, you should make sure that horses are fed in small amounts but more frequently. Okay, and you should maintain the consistent feeding schedule. कभी 7 बजे खाना खिलाया, कभी 11 बजे खिलाया, that should not happen. Okay? You should make sure that. And while feeding to these animals, the ratio of forage means roughage here. Okay? And roughage means both green fodder and dry fodder. जितना ग्रीन फॉडर रूमिनेंट्स में इंपॉर्टेंट है, हॉर्स में ड्राई फॉडर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ग्रीन फॉडर. अगेन आई एम रिपीटिंग, द वे ग्रीन फॉडर इज मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रूमिनेंट्स, हियर द ड्राई फॉडर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ग्रीन फॉडर in order to maintain the fiber content in the digestive system for the proper bowel movement. Okay? अगर आप देखिए 1 to 2% of the horse body weight, ड्राई फॉडर वहां क्या है, कैटल में 1% of the body weight, 2.5% होना चाहिए, उसमें 1% ड्राई मैटर should be made from the what you can say roughage. Okay, here 1 to 2%. So addition to that, you should also may ensure that there is a availability of fresh drinking water. Why we are telling here, by and large कैटल में आप देख सकते हैं आपका फीडिंग ट्रफ के बगल में वाटर ट्रफ होता है, ठीक है, बट हॉर्स में कभी भी हम लोग वाटर का प्रोविजन फीडिंग मेंजर के बगल में देते नहीं. वी विल ट्राई टू प्रोवाइड वाटर सेपरेटली. ओके, वी नेवर मेक ए वाटर ट्रफ इन द स्टेबल. ओके, सिंस वी डोंट प्रोवाइड water all the time, you should keep on offering water separately every now and then so that it consumes. Okay, another important consideration is that during this stable management, if at all if you want to make any changes in the feeding regime, it should be made slowly so that neither it will end up in the colic or diarrhea. And also while feeding, you should ensure that जो feeding trough होगा, it should be clean and हाइजीनिक. अगर थोड़ा बहुत वहां मोड़ रहेगा, आपने फ्रेश खाना डाला है बट उसके साथ वो खा लिया, अगेन इट विल एंड अप इन द colic one. Okay, certain foods like meat, rotten foods and vegetables, they are not recommended in this species. So now let us discuss about the nutrient requirement. I repeat, first I discussed about the feeding behavior, next I discussed about the anatomical feature of the horse,
Next, I discussed about the keeping the anatomical design or the future of these animals. What are the important points to be remembered? Okay. Now let us discuss about the nutrient requirement. Okay. One by one, let us take water. As I told you in the beginning, water is important to each and every species. There is nothing wrong. But these animals, if you don't offer, the animal cannot remain dehydrated more than 2 days. It will die. Okay? Unless other species. Yeah, this animal, you are let losing this animal on the pasture. अगर मान लीजिए सुबह से लेके शाम तक ग्रेजिंग लैंड में है, पैस्चर लैंड में है, ग्रीन पाउडर मिल रहा है, देन इट्स परफेक्टली फाइन. अगर आपका हॉर्स स्टेबल के अंदर है, टाई सिस्टम में, ठीक है, यू आर ऑफरिंग ओनली द ड्राई पाउडर, देन वाटर प्लेस एन इंपॉर्टेंट. ओके. और वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट in this animal because whenever you take work from these animals, they sweat too much. सब लोग देखा होगा, are sweat too much and produce lot of saliva, which I already told in the beginning. जैसे दूसरा स्पीसीज में क्या है, आपका जितना भी फीडिंग इनटेक है, that depends upon the production. In case of dairy animal, it depends upon the milk yield. In case of meat animal, it is based on the average daily gain. But in this species, it is based on the performance. Okay? अगर ज्यादा परफॉर्मेंस लेंगे नेचुरली डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, नेचुरली सलिवेशन ज्यादा होगा, and water demand certainly increases. Okay? On average, horse drinks 38 to 40 liters per day. और एक यूनिकनेस ये है इस एनिमल के साथ, if you don't show water to these animals, they may not even show any inclination for the वाटर इनटेक. अगर आप उसको पानी नहीं दिखाएंगे, वो डिहाइड्रेशन को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा. अदर देन दैट इट डज नॉट एक्सप्रेस एनी डिहाइड्रेशन बिहेवियर. इसीलिए यू शुड मेक श्योर दैट यू आर ऑफरिंग वाटर एवरी नाउ एंड देन. दिस इज वन पॉइंट. सेकंड पॉइंट, टू हॉट एंड टू कोल्ड बोथ प्रॉब्लम टू दिस एनिमल्स. अगर ज्यादा ठंडा पानी पिलाएंगे तो अगेन कॉलिंग बिकॉज ऑफ द पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, फिर अगेन कॉलिक में होगा. इसीलिए ठंडा पानी जो कोल्ड सीजन में होता है, अगर वो ज्यादा ठंडा पानी पिलाएंगे तो अगेन प्रॉब्लम. हॉट सीजन में पानी वैसे इट डज नॉट टेक. सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर आल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल. When you take hard work from any of these animals, okay, water plays an important role. In addition to that, in case of breeding animals, अगर stud farm में जहां mare is lactating, again demand for the water is more because of milk production. Okay. See, last point you see, horse spends very little time drinking, usually 1 to 8 minutes a day. It means that उनका पानी का inclination कम है, तो हमें खुद ही ट्राई करना पड़ेगा, बाल्टी से पानी बार बार दिखाना पड़ेगा. Or you should lead the horse from the stable to the outside and you should show the water. Then it consumes. Okay. जब when it consumes, again it takes little less water only. Ruminants में क्या है? If you might have observed, when it start drinking water, sometimes it will drink for 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes like that. But ये पूरा दिन में 8 मिनट ही पानी पी पा रहा है. ठीक है. So now, in addition to water, other important nutrients, जैसे एनर्जी, विच यू करेक्ट एज ए डाइजेस्टेबल एनर्जी, क्रूड प्रोटीन, ठीक है, ये इसका रिक्वायरमेंट. अगेन दीज रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ एनिमल एंड परफॉर्मेंस. आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं. ठीक है. मेच्योर आर्स की कैटेगरी के अंदर मेंटेनेंस के लिए कितना है, यदि ब्रीडिंग स्टैलियन होगा कितना है, प्रेग्नेंट मेल होगा कितना है. बट बॉडी वेट 200 है, मतलब जनरली बॉडी वेट मिनिमम 200 होता है. इफ इट बिकम 400 kg, सपोज टिपिकली स्टड स्टैलियन है, तो उसका बॉडी वेट 400 होगा. सो नेचुरली इफ यू टेक क्रूड प्रोटीन और डाइजेस्टेबल एनर्जी विच इज मेंशन्ड ऑन द कॉलम, सपोज लेट अस टेक स्टैलियन ब्रीडिंग सीजन हैविंग बॉडी वेट 200. ओके. तो इसका रिक्वायरमेंट है 9.3 मेगा कैलोरीज and 370 ग्राम ऑफ क्रूड प्रोटीन. इट बिकम्स डबल इफ इट बिकम्स a 400. So this is a type of a guidelines based on which you have to offer the feed. Okay, you have to offer the feed. So now this energy requirement
depends upon the type of work you are going to take or the type of animal. यदि एनर्जी रिक्वायरमेंट हम डेयरी एनिमल का बात करते हैं, देन वी यूज टू मेंशन दैट एनिमल हैविंग मोर देन 7 लीटर्स, क्योंकि 7 लीटर्स तक हम मान के चलते हैं जो हमारा नेचुरल ग्रीन फॉडर इनटेक से दैट विल फुलफिल दी मिल्क यील्ड अप टू 7 लीटर्स अलॉन्ग विथ 1 kg ऑफ कॉन्सेंट्रेट. ठीक है, जैसे जैसे मिल्क बढ़ेगा, देन विल से दैट फॉर एवरी 1 kg ऑफ मिल्क प्रोडक्शन यू शुड इंक्रीज दिस मच ऑफ कॉन्सेंट्रेट. ठीक है, बट इन केस ऑफ हॉर्स आवर एनर्जी वर्क डिपेंड्स अपॉन द वर्क. ठीक है, लाइट आवर्स होगा, थंब रूल्स रिमेन सेम, ओनली द एम्पिरिकल फार्मूला में जो कांस्टेंट वैल्यू है जो लास्ट में दिया गया है, लाइट वर्क के लिए इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1.2, मॉडरेट वर्क के लिए 1.4, हेवी वर्क के लिए 1.6, वेरी हेवी वर्क के लिए 1.9. ओके, सो दिस इज द digestible energy requirement for any type of animals. ये हमको कैलकुलेट करके फिर you have to decide the quantity of feed offered. प्रोटीन. ओके, जितना हम लोग प्रोडक्शन एनिमल में बात करते हैं उतना सीरियसली हम लोग प्रोटीन को कंटेंट को ज्यादा सीरियसली यहां नहीं लेते, क्योंकि इट्स ए बेसिकली ए मोनोगेस्टिक एनिमल and it is an herbivorous. Okay, the requirement of energy is more on the priority than the protein requirement. It does not mean that protein nahi chahiye. Growing animal यदि होगा, suppose I'll come back to that original slide. If you talk about gaining growing animals, यहाँ देखिए daily gain कहां से शुरू किया हमने, growing grasses. यहां जब बात करते हैं, ठीक है ना, उस समय आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्लेस इन इंपॉर्टेंट. बट जहां आपका एडीजी का बात नहीं आता, कोई ग्रोथ आके कांस्टेंट हो गया, वहां ओनली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ द सेल एंड द नॉर्मल फंक्शनिंग, नथिंग एल्स. ओके, सो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपका मिनिमम क्रूड प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है दैट विल सफाइस बाय एंश्योरिंग द एसेंशियल अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन. जैसे पोल्ट्री में हम लोग लाइसिन और मिथ्योनिन का बात करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल लिमिटिंग अमीनो एसिड्स. अगर वो रहेगा, then rest of the amino acids have been well taken care. If you don't take care of lysine, it means that a dam without gate. कितना भी आप प्रोटीन खिलाओगे, but essential amino acid होगा, that will not fulfill all these biological function. Okay, so what I mean to say is that the protein requirement for the horse is low. Okay, and deficiency in case of horse is rare, but minimum quantity of protein should be ensured. जैसे यहां देखिए, a mature 500 kg horse needs 660 gram. Again, I'll come back to this point. You see, an horse weighing 200 kg, कितना 361. अगर ये 400 kg होगा तो डबल होगा. वो वही चीज यहां दिया गया, 660 gram per day, because here the body weight of the horse is 500 kg. Okay, so here to conclude, the for horse relatively low protein is sufficient and deficiency rarely expressed. However, minimum quantity of crude protein should be ensured along with the provision of limiting amino acids like lysine and methionine. Next, fat. Fat is very much required for the glow of the skin, particularly those horses which are used for the race purpose and for the show purpose. Okay? But in case of horse, there is a habit or traditional feeding of this what you can say good quality of oil cakes, so that will take care of minimum fat requirement. यदि अगर हम ruminants लेते हैं, in order to meet fat requirement in the high yielder, we provide the bypass fat. फैट हम देना चाहते हैं, बट रुमिनेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग बाईपास फैट प्रोवाइड करते हैं. उस तरह से एक्स्ट्रा फैट इज नॉट एसेंशियल इन दिस एनिमल अनलेस एंड अदरवाइज यू आर टेकिंग टू मच ऑफ एक्सरसाइज एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए स्पेसिफिक शो. ठीक है. अनदर पॉइंट इज दैट सिंस आर्स डू नॉट हैव ए गॉल ब्लैडर, तो बैल जितना भी प्रोडक्शन, तो जितना भी फैट जिसे दूसरा स्पीसीज में ड्यू टू गॉल ब्लैडर, it will be released as and when it is required. But since in case of us there is no gallbladder, so bile it releases directly into the digestive tract. Okay, so that's why adding additional fat sometimes may
hinder the digestive process. Okay, so supplementation of fat is required only if it's in demand, otherwise not required. Okay, and whatever the nutrient requirement what we discussed with the first slide, it all depends upon the what type of category of animal and purpose, whether it's a pony, whether it's a race horse, whether you're using for equestrian sports, transportation, and what stage of life. All these nutrient requirements varies with the different situation. Okay. Now nutrient requirement आपने study कर लिया, but how to provide it? Though it is not possible to ensure exact quantity of full protein or digestible energy, but arbitrarily nearest possible, you should ensure that. Suppose if we talk about full protein, if you say that 330 gram of full protein is required for horse having body weight of 200 kg, then you should make sure that how much green powder I can feed, how much concentrate I should provide, how much dry powder I should. Okay, so that we have to depend upon the feed types. Okay. Generally, what happens in case of ruminant also, we provide roughage either in the form of green powder, dry powder. Here also it remains same. In addition to roughage, we also provide concentrate. Okay, either in the form of pellet, and here also it's same. Okay, जहां difference होगा subsequent slide में मैं discuss करूंगा. Another is mixed feed. Mixed feed में क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट फीड, जिसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. हमारा ड्राई पाउडर जो भी होता है सेपरेटली देते हैं, दैट आल्सो एडेड इन द कंसंट्रेट. दैट वी करते हैं कंप्लीट फीड. हियर वी करते हैं मिक्स फीड. ओके, समटाइम्स मिक्स फीड में यहां दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं. क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेट जो रेडीमेड राशन होता है उसको एज इट इज आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, ओनली वन ऑफ द इंग्रेडिएंट यू विल प्रोवाइड. ठीक है, अच्छा ग्रीन पाउडर प्रोवाइड किया, अच्छा ये प्रोवाइड किया, ओनली सप्लीमेंट को हम इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट में आप केक दे सकते हैं, चना दे सकते हैं. ठीक है ना, और एज ए एनर्जी सोर्स यू कैन गिव ईदर मेज और बार्ले. सो लाइक दैट, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज अ मिक्स्ड फीड व्हिच विल बी डिस्कसिंग. सप्लीमेंट्स, salt licks, mineral. Now green fodder. So when it comes to ruminant, आप कहीं भी छोड़ दीजिए कुछ ना कुछ, it will eat. It will not differentiate so much about it's a highly nutritious or non-nutritious, whether it's a leguminous or non-leguminous. ठीक है, but ours is not so. Its first preference is high fibrous, which I already told you, but the same time palatability and quality both इसको चाहिए. It means that non-leguminous fodders इतना it will not enjoy much. Its first preference would be leguminous green fodder. Suppose non-leguminous में आपका नेपियर हो सकता है, मेज हो सकता है, चॉप करके दे सकते हैं, but not in the large quantity, but in the small quantity. ठीक है, otherwise first preference would be leguminous grasses like alfalfa, lucerne. ठीक है, बरसी. Okay, so any type of fodder groundnut. ठीक है, so any leguminous fodders you can provide because इनका intake ज्यादा ना होने के कारण बल्क में ना खाने की वजह से आपको जितना भी fodder होगा that should be leguminous so that it will fulfill both energy as well as protein with respect to fodder. ठीक है, when it comes to fodder, even you can let loose these animal in the open pasture. Suppose stud farm में जाएंगे तो उनका काम only breeding है, तो इसीलिए उनका बड़ा बड़ा ग्रेजिंग लैंड होता है. ठीक है, दिन भर वो ग्रेजिंग में रहते हैं. फॉर सच एनिमल्स दे गिव ओनली सप्लीमेंट्स, जैसे कुछ बार्ले दे दिया एज एनर्जी सोर्स, कुछ उन्होंने लिनसीड दे दिया, कुछ उन्होंने सनफ्लावर केक दे दिया एज ए प्रोटीन सप्लीमेंट, एंड एडिशनली सॉल्ट लिक. बस इतना ही. they may not provide a typical concentrate wherein it will take care of both energy, protein and also fiber. ऐसे नहीं, जिसके पास sufficient grazing land होगा, and when the hour spends 7 to 8 hours. But like race clubs, जिसके पास ग्रेजिंग लैंड नहीं होता, उनको क्या है, स्टेबल में रख के उनको कल्टीवेटेड फॉडर ही खिलाना पड़ता है उस समय. देन दिस लिग्यूमिनस फॉडर्स प्ले ए मेजर रोल. अनदर इज हे. आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, रूमिनेंट के लिए ग्रीन फॉडर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ड्राई फॉडर इंपॉर्टेंट. ठीक है, व्हेन यू से ये, इट इज नथिंग बट ए ड्राइड ग्रास. बाय एंड लार्ज हम लोग ये
जनरली हम लोग प्रोड्यूस लेने के बाद, ठीक है, हमने वीट निकाल दिया, उसके बाद जितने भी स्टेम बचा गया उसको सुखा के हम लोग ये रखते थे। मेज में भी हम लोग हार्वेस्ट करने के बाद उसको एज ए ये फॉर्म रखते हैं। बट इन केस ऑफ हॉर्स द मोस्ट प्रिफर्ड ये अगेन इट्स ए लिग्यूमिनस। फॉरेन कंट्री में तो उनका ये का मतलब भी है लिग्यूमिनस, अल्फा अल्फा के उन लोग सुखा के उसको ये फॉर्म में खिलाते। इन इंडियन कंडीशन अल्फा अल्फा इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स वाई दे गो फॉर दी जई और बार्ले। ठीक है, हिंदी में जय कहते हैं, अदरवाइज बार्ले कहते हैं। द मोस्ट enjoyable straw for horse is that barley straw. ठीक है, oat what we call it as. Okay, oat is the first preferred with respect to grain, with respect to straw. ठीक है, so in addition to provision of this straw, okay, you can also think of giving the silage, but silage में बहुत cautiously रहना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं भी faulty silage होगा, स्मेल और फर्मेंट इलेक्ट्रिक एसिड की वजह से कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट टेक रिस्क ऑफरिंग दी साइलेज। ठीक है, एंड व्हाट दे प्रोवाइड स्ट्रा, जनरली इट इज चॉप्ड एंड गिवन, इट इज चॉप्ड एंड गिवन बाय मिक्सिंग विद द ग्रीन पाउडर अगेन, सो दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंपैक्शन इन केस ऑफ हॉर्स। ओके, नेक्स्ट कम्स टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट इज ए रेडीमेड राशन, and once you say concentrate, we always presume that it contains energy ingredients, protein ingredients, filler materials like bran, along with vitamins and minerals. ठीक है, वही हम मान के चलते हैं। उसी तरह से अगर आपका कंपोजिशन ऑफ राशन मेड फॉर हॉर्स अगर आप लेंगे, यू कैन सी वेरी टिपिकल कंटेंट। ठीक है, जनरली वी डोंट सी wheat at all एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक है, आपका कैटल फीड में मिल सकता है, वहां व्हीट एज ए एनर्जी सोर्स दे सकते हैं, बट हार्स में कभी भी एज ए एनर्जी सोर्स हम लोग नहीं डालते। फर्स्ट विल बी बार्ले और वोट एंड मेज इज द लास्ट ऑप्शन। अदर स्पीसीज मेज कम फर्स्ट। ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ हॉर्स एज ए प्रोटीन सोर्स, इधर इट इज ए सोयाबीन और ग्राउंडनट बी एनी गुड क्वालिटी vegetative source as a protein, but not like mustard cake or any other cakes. Okay, wheat bran as a filler material, along with that the minerals and this one, but you don't see any addition of urea in this feed or feed. Okay, molasses is also sometimes added, but while making the pellet, but not to increase the energy content. हम लोग जब कैटल का राशन बनाते हैं, we add urea to increase the protein, we add energy, molasses to increase the energy content, and also as a binding material. Okay, as a binding material, but both are not done in this case. Okay, but as far as the system of offering concentrate, ready-made concentrate in the stud farm is very rare. बना हुआ राशन हॉर्स में खिलाने का प्रैक्टिस नहीं। देयर आर टू रीजन, वन इज जितना भी एलिट फार्म हॉर्स ओनर्स होते हैं, देयर आर्सेस आर ऑलवेज लेट क्लोज इन द ओपन ग्रेजिंग लैंड दैट विल फुलफिल देयर मेजॉरिटी ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो व्हाट दे डू, दे गो फॉर मिक्स्ड फीडिंग। मिक्स्ड फीडिंग में क्या होता है, जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग राशन में डालते हैं उसी को वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, जैसे सुबह से शाम तक ग्रेजिंग हो गया, शाम को आने के बाद थोड़ा सा ओट्स खिला दिया या थोड़ा सा बार्ली खिला दिया, अलॉन्ग विथ सम केक, दैट्स ऑल। ठीक है, समटाइम्स उनको लगा कि एनर्जी का जरूरत नहीं है, ओनली प्रोटीन खिला दिया, कोई केक डाल दिया उन्होंने। अदरवाइज केक कम डालते हैं, ओट्स या बार्ली उसको एज ए सप्लीमेंट होते हैं इन एडिशन टू देयर नेचुरल ग्रेजिंग विच इज डन इन द पैस्चर। ओके, अदरवाइज द इंग्रेडिएंट्स एज ए एनर्जी इंग्रेडिएंट्स, अगेन आई टोल्ड यू, ओट्स, कॉर्न, barley, and wheat is the last option. See, wheat is not generally used. If at all used, it's used as a bran, as a filler material, but not as a energy ingredient. First choice is oat. As a protein, again, soybean, linseed, and groundnut cake, but not the mustard cake. Mustard cake is the last option. Okay, last option. So whenever these protein sources are fed and good energy sources are fed, ठीक है, additionally we go for the supplements, and most common supplement is salt lick. ठीक है, salt lick में
एक होता है सिंपल रॉक साल्ट, जैसे नॉर्मल साल्ट लिक में क्या सोडियम क्लोराइड होता है, रॉक साल्ट में पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सिंस दिस एनिमल स्वेट्स, ठीक है, इसीलिए साल्ट लिक की जरूरत पड़ता है। बट बाय एंड लार्ज साल्ट लिक देने का पर्पस इन केस ऑफ हॉर्स इज फॉर 3 रीजन। वन इज वेरी क्विकली डेवलप्स वॉइसेस, ठीक है। अगर मान लीजिए बोर्डम हो गया, कोई पुअर क्वालिटी फीड खिला दिया, देन इट विल स्टार्ट डेवलपिंग दी crib biting, manger biting, or pica. So just to keep engaged these animals, they go for the salt lick. Okay. Second, since this animal, when you take work in the form of race or any type of work, so there is a profuse sweating, there is a loss of minerals. Second. Third, by giving the salt lick, it encourages the water intake. It encourages the water intake. ये 3-4 कारण की वजह से salt lick हमेशा दिए जाता है इन हॉर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर रेडीमेड राशन नहीं दे रहे तो देन यू हैव टू प्रोवाइड द विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट सेपरेटली। अदरवाइज इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी रेडीमेड राशन देन इट मे नॉट रिक्वायर। मिक्स्ड फीड, अगेन अभी थोड़ी देर के लिए हमने डिस्कस किया था, हम एक्सक्लूसिवली आप राशन बना के खिलाइए बाय यूजिंग दीज इंग्रेडिएंट्स, और you can make your horse sufficient by allowing to graze in the natural pasture and supplement with the few supplements, either oat or potassium or any leguminous green farm. Okay, so this is all about what you can say feeds. Then comes last slide. ठीक है, ये तो हमने बोल दिया। फीडिंग सिस्टम कैसे खिलाना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वन इज स्टॉल फीडिंग। यदि इफ योर एनिमल्स आर नॉट लेट लूज और आपके पास ग्रेजिंग लैंड नहीं है, तो आपको इसी स्टेबल के अंदर जहां मेंजर होगा, देयर ओनली यू प्रोवाइड ट्वाइस डेली, ओके, एंड ग्रीन फॉडर इज प्रोवाइडेड आड लिव ऑल द टाइम, ठीक है। इन केस ऑफ टांग आर्सस इस तरह से फीडिंग बैग्स दिया जाता है, एज एंड व्हेन दे गेट लिटिल टाइम जस्ट दे विल पुट ओवर द नेक सो दैट दे आर एंगेज ड्यूरिंग दी फ्री टाइम। सुबह शाम को अगर खिलाने के लिए आपको मौका देंगे और दिन भर काम लेंगे, अगेन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर ईटिंग, क्योंकि भूख ज्यादा हो गया और शाम को तुरंत खा लिया, देन अगेन इट लीड टू colic. Okay, that's why. So during idle period, so they try to provide with the help of feeding back. So with this, I complete today's talk.